So, hello and namaste. Today we are conversing with two people who are chartered accountants. We are having a conversation with chartered accountants today. If you are aspiring to be a CA, if you are aspiring to be in the accounts, taxation, business, finance vertical, if you aspire to do something in this field, you are at the right place in the right conversation. Why? Because today we are going to ask a chartered accountant who has 1.5 decades of experience, 15 plus years of experience, who had been working with companies like the best ones. Heard of PwC, EY? Yes. So multinational companies in consulting in accounts, finance, he was working with them. Then he turned into an entrepreneur. Apart from that, he also worked in an education company. He is now leading a company called as Omnifin Solutions. He is the big boss there. He is a registered valuer. Now, what does a registered valuer do? How is his life today? And how was his life when he was working with these companies? We are going to ask all about this and learn from his skills, learn from his experience, learn from what he says as do's and don'ts, and try to imbibe it in our career. That's all what I talked was about the gentleman other than me. He is Mr. Vikash Goel. To introduce to you the next person, who is the lady in the room here who has 1.5 years of experience, and she is a CA, CS, and an ICWA. She has been the All India ranker in CMA, 23rd, and in CS, the company secretary, she has been the AIR 9, All India ranker 9, and she has been a CA. We'll definitely ask her, itna kyun pada? Why do you wanted to become a CA, CS, and CMA? Even we'll ask Vikas why he did a CA and then he also did a CFA, and he also studied at IIM Calcutta. उनके घर के पास था शायद, because he was living in Calcutta. And Nikita Agrawal works in Pune. And Nikita Agrawal is basically from Bengal. So we have these people and we're going to ask them about their experiences, their learnings, their skills. How did they become a CA, CS, and all of it? Before we get into all that, which really matters for you, which is going to be an experience of learning for you, and then to take your questions, I'm going to first welcome them and ask them some basic questions, और फिर आपके मन के difficult questions की तरफ भी बढ़ेंगे. Fine. So let's welcome Vikas and Nikita. Put it in the chat. Welcome Vikas, welcome Nikita, and then I'll take this discussion on. So welcome Vikas, welcome Nikita. Thanks for being here. Thanks for putting in your time. You were working for till 6:30, Nikita, and then you have not yet taken your dinner and you're here. Vikas, I know about you. You were in the Calcutta, in the city where you were working, and then you rushed home in the traffic to be here. Thank you for being here on a Saturday evening. That's wonderful. So let me begin with Nikita first. Nikita, you did your CA. I believe that is the first thing you achieved. Then you went for CS and then CMA. Am I correct in that? No, sir. Okay. Actually, first I completed my CS, Wonderful. then CA and CMA together. Wonderful. So tell us something about why did you choose to do CS? वहां से शुरुआत करते हैं. क्यों CS करना जरूरी था? किसका सपना पूरा करना था? सर सपना तो अपना ही पूरा करना था. Wonderful. Basically, I had a love for degrees and मतलब स्टार्टिंग से ऐसा था कि नहीं, नाम के आगे 3-4 डिग्री हो तो नाम का रुतबा कुछ अलग ही हो शायद. Wonderful. तो स्टार्ट की जर्नी, स्टार्ट किया सीए से. तो सीए की जैसे फर्स्ट लेवल एग्जाम हुई, अब उसमें मतलब लकीली आई गॉट अ रैंक AIR 4 इन सीए फाउंडेशन. बट किस्मत थोड़ी बुरी थी कि रैंक पब्लिश नहीं हुआ. At that time, institute decided not to publish the ranks. So ठीक है, फर्स्ट स्टेज में थोड़ा सपना अधूरा रहा. चलो फिर CS और CMA भी है आगे, साथ में करते हैं. Then I gradually worked for IPCC and that I cleared in first attempt. So then decided to join CS and CMA.
uh, given the exams of CS, and I scored rank in the inter level. Wow. So then gradually, with the confidence increased. So okay, I can give further exams. So completed then in the very next year, given CS professional, and it got completed. You are giving so much complex to my students over here, Nikita. अब ऐसे करो जैसे CS ऐसे ही करते गए और निकल गए. Did you really work hard और नहीं? Yes, कितना sir. पढ़ाई करते थे? How much did you study for the Sir, process? पढ़ाई, sir, actually I never counted on hours. It was like whenever I was having the mood to study, I used to study. It was Mhm. my love for study and not the hours. I Mhm. never used to watch the clock when I was studying. That's Sometimes wonderful. it was like for a whole day I didn't study even a single word. And Mhm. the very next day it may be like I studied very long. Mhm. So Average. I never counted on it. यू नेवर काउंटेड. आई नो दैट. जो लव होता है, जो प्यार होता है किसी काम का, उसमें काउंट करने की आवश्यकता ही नहीं होती. आप करते रहो एंड ऑल. वी हैव स्टूडेंट्स जो दिन भर क्रिकेट खेलते हैं. दे कीप प्लेइंग क्रिकेट और उनको कोई टेंशन नहीं होता है. हम भी थे बचपन में वैसे. पर Hmm. आप अगर एवरेज कहा जाए, अब सीए बहुत हिसाब किताब वाले लोग हैं, सो यू मस्ट बी नोइंग सम नंबर्स, राइट? सो एवरेज अगर कहा जाए तो आप कितना, 4-6 घंटे पढ़ लेते थे या 10-12 घंटे दिन के पढ़ लेते थे? कितना घंटा पढ़ लेते थे दिन के एवरेज? सर जैसे सीए में ट्रेनिंग कंपलसरी होती है आर्टिकलशिप 3 इयर्स की, तो उसमें नॉर्मली ऐसा होता था कि मॉर्निंग 10 to इवनिंग 6-7 वी यूज्ड टू वर्क इन ऑफिस. देन उसके बाद मतलब डेली के अगर 3-4 घंटे भी पढ़ाई हो जाए तो मोर देन सफिशिएंट है. और एग्जाम्स के जस्ट पहले 3 to 4 months 10 to 12 hours is just sufficient. is just sufficient. So, boys and girls, note this point very clearly. Ma'am ने घंटे गिने नहीं थे. Nikita did not count the hours. But when she talks about it, average, apart from working for 8 hours in a day, she spent around 4 hours, 3 to 4 hours studying, not watching web series, not gossiping, not on social media. And 3 to 4 months before the exam, it was around 10 hours a day of study. विकास जी, 15 साल पहले आपने भी Right. सीए कंप्लीट किया था. आपका जी. लर्निंग का क्या था? हाउ मच डिड यू पुट इन एफर्ट्स? So Sumit, I have not been as great a student as Nikita, but yeah, I haven't been too bad either. So uh, actually, it's very nostalgic because we're going back probably 17, 18 years, 18, 19 years now because 15 साल से तो काम ही कर रहे हैं. उसके पहले 4 साल we spent studying. So I remember after class 12 when we had to decide what professional course we want to take up. So I knew that मुझे CS नहीं करना है because it had a lot of law and I'm not a person who could memorize things. I knew कि CMA was probably, I mean, it never came to my mind to be very honest. I was confused between CA and CFA, and it was a tough call because there was probably nobody around to guide me कि मैं क्या करूँ नहीं करूँ. So अचानक से I finally decided that चलो CFA करेंगे. Right, and after like 15-20 days of deliberation I decided that I'll go for CFA because I loved the curriculum. I mean, I had no idea कि कौन सा career अच्छा होगा नहीं होगा, but some professional degree was required. So the day I decided कि मैं CFA करूंगा, I came and told dad कि पापा finally I've decided कि मैं क्या करूंगा. So इतने दिन तक वो एडवाइस नहीं कर रहे थे, बट जिस दिन मैंने डिसाइड किया, बिफोर आई स्पोक कि मैं क्या करना चाहता हूँ, ये सेट कि देखो तुम कुछ भी करो, तुम सीए जरूर करना. So I was like, अरे इतने दिन से मैं कंफ्यूज था and now he's told me कि तुम सीए जरूर करना. So अब क्या करें? Now there was a choice between what I have decided versus what my dad wants. So ultimately I said चलो confusion छोड़ते हैं, दोनों कर लेते हैं. So I enrolled into both. And in those days, the CA Institute did not allow somebody to do two courses at the same time. But whatever, so अब कर लिया है तो कर लिया है. So I jumped into both, and I am from St. Xavier's College, which is very particular about attendance. So our college used to start at 6:30, sorry 6:10, right? So in the morning, and it used to get over at 9:40. So बचपन से ही attendance वगैरह हमेशा अच्छा रहा है. So effectively for the 3 years of my graduation, and effectively 4.5 years that I took to complete my CA. So I was plus CA plus CFA, right? And I had a full-time girlfriend at that time.
Plus, I had my articleship going on at that time. So effectively, 3 साल तो my family did not see my face. I missed out on my relatives' wedding. मतलब I always was the busy person around, right? Because like see, so that journey is very similar to anyone who does CA, because like Nikita also said that आपको articleship करनी होती है 6-7 घंटे 8 घंटे, and tuition लेना है तो लेना है. So but I want to highlight one thing, because I know there's a lot of students watching, कि स्टूडेंट्स टिपिकली क्या करते हैं ना, वो एक वॉल क्रिएट कर देते हैं. दे क्रिएट अ वॉल बिटवीन देयर एकेडमिक्स एंड देयर आर्टिकलशिप. उसकी वजह से उनको बहुत प्रेशर फील करना पड़ता है, बिकॉज देन दे गो आफ्टर 6-7 पेपर्स का ट्यूशन, एंड आर्टिकलशिप में तो जो चल रहा है वो चल रहा है. व्हाट आई वांट टू हाईलाइट, आई थिंक बिकॉज मुझे आई थिंक आई टुक 3 पेपर्स का ट्यूशन, राइट, and there were 8 papers, so I did not take tuitions for the rest of the papers, precisely because I was always able to relate कि हम लोग articleship में जो कर रहे हैं, that is what is the curriculum all about. And I did my articleship from a relatively mid-sized firm at that time. I mean, it's not that कि मैंने Big Four से articleship करी थी. So while I was able to relate what I am doing in my articleship and what is there in the curriculum, I think the journey became easier for me. I am not a person who could study 10-12 hours. Trust me. मतलब 8 घंटे काम करने के बाद में 4 घंटे पढ़ाई, तो वो होता ही नहीं था. So and I was doing job at, जब मेरा articleship नहीं था तो I was doing job. I was taking tuition, में पढ़ाता भी था उस समय. तो सुबह 5 बजे निकल के रात को 10 बजे तो घर घुसते थे. उसके बाद में कहाँ पढ़ेंगे, मतलब वो एनर्जी होती ही नहीं थी. So I think I had to rely on what I am experiencing in my articleship. जो ट्यूशन लेने जा रहे हैं तो वो जब टीचर पढ़ा रहे हैं उसको इतने अच्छे से अब्जॉर्ब करने की कोशिश करते थे कि घर जाके वापस उसको उतना डिटेल में पढ़ने की जरूरत ना पड़े. बट येस, ऑफ कोर्स बिफोर द एग्जाम्स 2 महीने 2.5 महीने की छुट्टी लेना और उस टाइम पे बहुत स्लॉग करके पढ़ना was the order. And plus, of course, there was motivation कि I can't fail in the exam, right? So yes, thankfully cleared all my exams in first attempt. Became CA and CFA and had a master's in finance and was a BCom from St. Xavier's by the age of 22. So I think, yeah, quite. I mean, you give the example of Sachin Tendulkar, right? So I think I was never a very intelligent student. I was always an average student, but I think that commitment was there कि अच्छे से करना है, and that's what helped me pass the exam. So this one last point gives me a trigger again to ask you another question, which says मैं उतना intelligent नहीं था, average था. Now let me pick your brains on this. अब इंटेलिजेंट का मतलब क्या? एक बार में जिसको समझ में आ जाता है, पढ़ लेता है तो याद रहता है, उसको मैं इंटेलिजेंट कहूं, या क्या वो डिफरेंस क्या होता है? इज देयर रियली अ डिफरेंस कि मैं एक बार में पढ़ लूं तो समझ आ जाता है और मेरे को 4 बार पढ़ के सब समझ में आता है? ये डिफरेंस मैं इंटेलिजेंट और एवरेज कर सकता हूं? So okay, I probably chose the wrong word, but I'll tell you what I was not, right? So मेरा मैथ्स में वर्ल्ड रिकॉर्ड है, ठीक है. आई हैव अ वर्ल्ड रिकॉर्ड इन मैथ्स कि मेरे को मैथ्स में 2/100 मिला हुआ, राइट. एंड आई ब्रोक माई ओन रिकॉर्ड कि मेरे को उसके पहले 5/100 मिला था. सो आई मीन टिपिकली व्हेन यू हियर पीपल, जो लोग थोड़े अच्छे स्टूडेंट्स की कैटेगरी में फॉल करते हैं, या तो वो लोग लॉजिकली बहुत स्ट्रांग होते हैं. आई मीन दे हैव अ वेरी स्ट्रांग इंक्लिनेशन टुवर्ड्स कैलकुलेशन एक्सेट्रा, राइट. सो मैं उस कैटेगरी में बिल्कुल नहीं. आप अभी मुझसे एक सिंपल एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन पूछेंगे, शायद मैं नहीं बता पाऊंगा. And then there are other type of students who are very good at memorizing things. जैसे आज आप फॉर एग्जाम्पल निकिता इज अ CS, तो उन्होंने इतना लॉ पढ़ा है, आप उनको पूछेंगे कि अच्छा ये सेक्शन क्या बोलता है, वो सेक्शन क्या बोलता है, तो तुरंत बता देंगे. मेरे साथ ये दोनों ही नहीं होता था. मेरे साथ ये दोनों नहीं होता था. तो मुझे आप कुछ मेमोराइज करने के लिए बोल दीजिए, मैं वो नहीं कर सकता. मुझे अगर आप कुछ बहुत ज्यादा लॉजिकल कुछ मैथ्स बोल दीजिए, मुझे वो भी नहीं आता था. बट आई थिंक व्हाट आई वाज ओके एट, व्हाट आई वाज गुड एट इज आई वाज लाइक आई सेड कि मैं उसको रिलेट कर पाता था कि मुझे जो पढ़ाया जा रहा है उसका रियल लाइफ में क्या एप्लीकेशन हो सकता है, मुझे क्यों पढ़ा रहे हैं. आज करिकुलम में अगर इंस्टीट्यूट ने कुछ डाला है तो उसको किसी कारण से तो डाला होगा, किसी की विम्स एंड फैंसीज पे नहीं आया होगा. सो आई ऑलवेज ट्राई टू रिलेट इट टू द बिजनेस, राइट, टू द रियल लाइफ, कि भाई अगर अकाउंट्स में ये एंट्री है तो ये एंट्री कहाँ से आ रही है, ये फाइनेंस में अगर ये कॉन्सेप्ट है तो ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आ रहा होगा. एंड व्हाइल आई वाज एबल टू रिलेट टू इट, मुझे याद करने की जरूरत नहीं पड़ती थी. आई वाज एबल टू अप्लाई इट बेस्ड ऑन द कॉन्टेक्स्ट रादर देन आउट ऑफ माय मेमोरी. सो जैसे ऑडिट है, तो ऑडिट में अगर मुझे जाना है कि मुझे रेवेन्यू की ऑडिट करनी है, तो लॉजिकली मैं उसको क्या चीज मुझे देखने की जरूरत पड़ सकती है, कहाँ वो चोरी कर सकता है, राइट. अकाउंटेंट जो है या जो कंपनी है वो कहाँ मैनिपुलेशन कर सकता है, उसके ऊपर सोचते थे.
और वहां से रिलेट करने की कोशिश करते थे, तो कॉन्टेक्चुअलाइज हो जाता. आई डोंट नो इफ आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन, बट आई I कैन से got व्हाट आई हैव डन. I got this point and I'll ask Nikita again this point. Nikita, विकास जी जो बोल रहे हैं कि लॉजिकल होना और मेमोराइजेशन की स्किल होना, मेमोराइजेशन का भी एक टैलेंट होता है, कुछ लोगों को एक बार में बहुत कुछ याद हो जाता है, एक लॉजिकली समझ पाना, और तीसरा विकास जी ने भी एक और जोड़ा है, वो है एप्लीकेशन ओरिएंटेड होना. व्हाट डू यू थिंक आर द बेसिक 2-3 क्वालिटीज विच आर रिक्वायर्ड, जो होनी चाहिए बच्चों में? अगर वो नहीं है तो नहीं आप ट्राई करो यार सीए बनने की, ऐसा, इस एंगल से मैं आपसे वो सवाल पूछना चाहता हूँ. जैसे विकास सर ने कहा कि आपको अप्लाई करने आने चाहिए, जो आप पढ़ रहे हो और जो आप काम कर रहे हो दोनों में रिलेट करना चाहिए आपको. बेसिकली मेरी भी जो जर्नी रही है, मैंने कभी कोचिंग क्लासेस नहीं ली. वंडरफुल. सो आई डिड ऑल माय 8 पेपर्स बाय सेल्फ स्टडी ओनली. एंड जो काम ऑफिस में करते थे उसको रिलेट करते थे, अच्छा किताब में ऐसा कुछ तो टॉपिक था और अभी वही कर रहे हैं, और उसके बाद जिस दिन वो काम वो किए उसके बाद वापस से वही टॉपिक पढ़ो तो आप उसको अच्छा रिलेट कर पाते हो. तो और वो लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट रहता है माइंड में, कि एग्जाम में भी मतलब सीए इंस्टीट्यूट भी ओवर द इयर्स अपना पैटर्न चेंज कर रही है. पहले आता था थियोरिटिकल कि आप मेमोराइज करो और जाके बस लिख दो, वैसे पेपर्स होते थे. नाउ द पैटर्न हैज चेंज्ड एंड इट इज मोर और लेस प्रैक्टिकल ओरिएंटेड, कि अगर आप प्रैक्टिकली काम किए हो, प्रैक्टिकली उसको समझे हो, तभी आप अटेम्प्ट कर पाओगे. जैसे अभी रिसेंटली एक ओपन बुक पेपर का अपना कंसेप्ट आ गया है कि एक पेपर अब ओपन बुक होगा, कि आपके पास आपको जितनी किताबें लानी आप ले आओ, जितने नोट्स लाने ले आओ, आपके सामने क्वेश्चन है, आपके सामने पेपर, आपकी किताबें हैं, आपको 3 घंटे के बजाय 4 घंटे दिए जा रहे हैं, आप वो पेपर सॉल्व करो. अगर सिर्फ आपको याद करने से अगर वो टॉपिक आप सॉल्व कर सकते हैं, तब तो वो पेपर में 100 में 100 किसी को भी आ जाता. बट सबसे टफ पेपर सीए इंस्टीट्यूट का माना जाता है उसी को, ओपन बुक, कि आपको अपनी लॉजिकल रीजनिंग जो है, आपके मतलब जो एप्लीकेशन है, कि आपको सीए बनने के बाद आपको कहीं से बुक खोल के बस बोलना नहीं है, आपको उसको अप्लाई करना है प्रैक्टिकल सिचुएशन में. तो अब अपना एग्जाम पैटर्न भी वैसे होते जा रहा है. तो अगर आप काम के साथ अपनी पढ़ाई को रिलेट नहीं कर पा रहे हो तो आपको आगे जाके दिक्कत जरूर आएगी. वंडरफुल. सो एक चीज जो मैं यहाँ से ले जा रहा हूँ हमारे डिस्कशन से, और प्लीज करेक्ट कीजिएगा अगर मैं गलत हूं तो, दैट व्हाइल बिकमिंग अ सीए इट इज नॉट कि आप सिर्फ पढ़ाई करते रहें, आपको जो आर्टिकलशिप करना है वो सिर्फ नाम का मत करें, वो एक्चुअली काम का करें, जिससे कि आप रिलेट कर सकें आपकी पढ़ाई को और आपके काम को. एंड इफ यू कैन गेट दैट बेस्ट आर्टिकलशिप और उसके साथ में आपकी पढ़ाई साथ में हो जाए, सो दैट इज समथिंग विच विल बी अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन फॉर बिकमिंग अ सीए, और फॉर एटलीस्ट योर एग्जामिनेशन फॉर योर सीए. डज दैट मेक सेंस? यस सुमित, आई थिंक, Yes, sir. बट एट द सेम टाइम बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो ऐसा फील करते हैं कि नहीं, मेरी आर्टिकलशिप बहुत छोटे फर्म से हुई है, मैंने वहां पे ज्यादा कुछ सीखा नहीं है, उसमें वहां पे बहुत लिमिटेड क्लाइंट्स हैं, या सिर्फ इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया है, एटसेट्रा. सी, आई थिंक देयर इज नो एंड टू हाउ मच यू कैन लर्न, बट एट द सेम टाइम 3 साल आप अगर एक फर्म में बिताते हैं, इवन इफ यू आर वर्किंग अंडर वन सीए ओनली, एक सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म में भी अगर आप काम करते हैं, तो देयर आर टन्स ऑफ थिंग्स टू लर्न, राइट? सो किसी भी केस में उसको अंडरमाइन करना, आई मीन आई रिमेंबर वेरी क्लियरली सुमित जी, वन ऑफ माय सीनियर्स, शायद 1-2 साल सीनियर थे मुझसे, उन्होंने मुझे एक बात कही थी विच आई ऑलवेज रिमेंबर, आई हैव नेवर फॉरगॉटन दैट, कि आप अपने करियर में, अपने कोर्स को, अपने करियर को, अपने इंस्टीट्यूट को, अपने फर्म को अगर आप रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, आप अपने एग्जाम को रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, तो वो आपको रिस्पेक्ट नहीं करेगा, right? So I think that sense of, I might sound it might sound a little bit of a like moral values kind of a thing, but trust me, it matters a lot. So there are a lot of, I mean, सब लोगों को बहुत बड़े फर्म में एक्सपोजर नहीं मिलता है, but if you are working there for 3 years, you also have some responsibilities, right? So respect whatever you are learning rather than what you are not learning, because there are tons of things to learn, and everywhere people will learn some things and not learn some other things. Definitely. और एक्सपीरियंस एक जगह का अलग होता है और दूसरे जगह का अलग होता है. If you want to learn from all experiences, you cannot work everywhere. You could talk to Nikita, you could talk to Vikash, and you can share your experiences. You could learn from that as well instead of gossiping around, my dear boys and girls. चलिए, तो मॉरल वैल्यू से थोड़ा आगे बढ़ते हैं साहब. आपका फर्स्ट जॉब पे आते हैं. आपने सीए तो कर लिया, सीएस कर लिया, एंड देन यू had to search for a job or job came knocking to you? What was the scenario?
CS बन गए तो लोग अपने आप आपको फोन लगा के नौकरी आप कहाँ हैं, आप ढूंढ रहे हैं आपको और जॉब दे रहे हैं, या आपको भी अप्लाई करना पड़ा, और आपको अपनी पहली जॉब कैसे मिली और उसका क्या सैलरी था? व्हाट वाज द एक्सपीरियंस अबाउट योर फर्स्ट जॉब? निकिता, लेट्स बिगिन विथ यू. You have a recent experience of 1.5 year before. How did you get into the first job? आप भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड तक कैसे पहुंची? सर सुनने में स्टार्टिंग में ऐसे लगता है कि नहीं चलो सीए है, सीएस है, तो नौकरी के लिए बहुत फोन कॉल्स आए होंगे, बट सर ऐसा सिचुएशन बिल्कुल नहीं होता है. प्लस मेरी किस्मत कुछ ज्यादा ही अच्छी थी कि मैंने जब क्लियर किया तो कोविड भी आ गया साथ में. जितनी वैकेंसीज थी ऑलरेडी क्लोज हो चुकी थी. लकीली आईसीआई का एक कैंपस कंडक्ट हुआ था बैंगलोर में, तो मैंने वहां पार्टिसिपेट किया एंड वहां भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड आई थी. तो वही मेरा इंटरव्यू हुआ एंड देन टोटली एवरीथिंग वाज साइलेंट. इंटरव्यू हुआ मेरा मार्च में एंड देन कोई कॉल नहीं, कुछ नहीं, नथिंग. पैंडेमिक स्ट्राइक किया, टोटल लॉकडाउन. कहीं से मतलब कुछ लग ही नहीं रहा था कि कुछ होगा भी क्या अब अपना. बट अचानक सडनली ऑन 6 May I got a mail from Bharat Electronics, Nikita, we are interested to hire you, so are you available? एंड मीन्स वो डे था कि अरे किसी कंपनी ने मुझे नॉक किया कि नो नाउ आई कैन मीन्स ज्वाइन वन कंपनी. एंड देन आई रिसर्च अबाउट द कंपनी एंड ऑल दैट नहीं कंपनी अच्छी है, लोकेशन अच्छा दे रही है, सो व्हाई नॉट टू गो टू पुणे. बट अगेन कि मुंबई महाराष्ट्र वाज द वर्स्ट अफेक्टेड स्टेट. एवरीवन वाज लाइक ऐसे टाइम पे कौन महाराष्ट्र जाता है, पागल है क्या. So my joining was little bit delayed, but then some seniors suggested me, see you are a fresher and now if you will waste time thinking that pandemic is there and when it will go no one knows, so better to take precautions and start your professional journey. So then Wow. I am here in Pune on 2nd of July 2020 and joined the company after having 14 days quarantine which extended up to 21 days. Wow, 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 wow. This is worth clapping. Power to you, Nikita. Boys and girls, this is something which you should really salute Nikita for. A person getting an offer, yes, luck, but look at her courage that she joined in the mid of the pandemic, in the first wave, the lockdown part of it. जब हम लोग घर में थाली बजा रहे थे, that time Nikita was actually joining in Bharat Electronics Limited. Now, Nikita, tell us something about your job. यहाँ पे आप क्या करते हैं? As an accounts officer, as a chartered accountant, what is your role here? What do you really do? Sir, I joined Bharat Electronics as an accounts officer, and some roles and responsibilities have been assigned to me. But sir, actually it's a defense PSU, so due to confidentiality agreement and all, I am not allowed to disclose much about the company and their working culture. चलिए. So let me ask you a general question. What does a chartered accountant has to do when he joins a manufacturing or any company? Generally क्या करना पड़ता है as a accountant, as a CA? Basically the role is basically what I have understood that the role is basically about how to manage people, and because काम तो हर कोई कर सकता है, but कैसे करवाना है, क्योंकि आप वन मैन आर्मी नहीं हो. जब आप कोई कंपनी ज्वाइन कर रहे हो तो आप अकेले सब कुछ नहीं कर सकते. अगर आप सोचो कि हम अकेले पूरा फाइनेंस को मैनेज कर लें तो वो पॉसिबल नहीं है. यू हैव टू टेक अ टीम टुगेदर, अ ग्रुप टुगेदर. So you should have that leadership skills along with you to manage the people, to get the work done. And to means you have to rely on people that they will get the best work done for you. And means in manufacturing. So is it like that people have to do their accounts entries and finance entries and things, and then you are there to monitor it, or you are there to accounts, a chartered accountant does all these transactions? No, the entries and all वो entry level कुछ accountants रखे हुए होते हैं, वो करते हैं. जैसे graduates हुए हैं वगैरह, वो जैसे entries वगैरह कुछ किए हैं. अब सपोज कोई क्रिटिकल केस आ गया, सपोज फॉर एग्जाम्पल
कि कुछ ऐसी कुछ एंट्रीज आ गई जिसमें टैक्सेशन मैटर्स भी है, फिनेंस मैटर्स भी है, जीएसटी भी है, इनकम टैक्स भी है। तो उस टाइम पे आपके स्किल्स की जरूरत पड़ती है कि इस सिचुएशन में कैसे क्या एंट्रीज होनी चाहिए, क्योंकि एंट्रीज मैनिपुलेशन भी बहुत होता है। तो उस केस में करेक्ट क्या परव्यू होना चाहिए, उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट जीएसटी में क्या होगा, इनकम टैक्स में क्या होगा। तो वो बेसिकली एक सीए का रोल होता है कि वो इंश्योर करे कि कहीं कोई भी लॉज एंड जितने भी अपने लॉज है वो जैसे प्रॉपरली फुलफिल हो, कहीं उसमें कोई दिक्कत ना रह जाए। Wow. So the company relies on a chartered accountant to follow the accounts transactions, finance transactions by the book. कि भैया कुछ गलत नहीं कर दो, नहीं तो बाद में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले ही पकड़ लें या एक्साइज वाले आके पकड़ लें कि भैया तुम ये क्या कर रहे हो, आजकल एक्साइज तो है नहीं, जीएसटी है। सो विकास जी के पास जाते सर हैं। बाद में कोई जी जी जी, बोलिए निकिता जी। सर बाद में कोई हो सकता है सीए ही आके आपको पकड़ ले, क्योंकि स्टैट ऑडिट, टैक्स ऑडिट सब तो चलते रहता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। विकास जी, आपने ईडब्ल्यू, यू जॉइंड ईडब्ल्यू पीडब्ल्यूसी आई बिलीव फर्स्ट Yes. आफ्टर योर सीए, right? No, so I had joined Peter. So I have been very lucky, Sumit. I always believe in counting our blessings. So I so since I had cleared all my exams in first attempt and वो provisional admission लेते चले गए थे. So when I wrote my CA final exams, तब तक मेरा 10 months plus का articleship बचा हुआ था. And so 3 साल की articleship होती है, and in our times we were allowed to give the final exam before the articleship was over. I don't know how it stands today. So after I had written my exam, I had asked my principal, "Ki, sir, I am looking for some industrial training exposure because I don't want to be into practice." Because हम लोग जब आर्टिकलशिप में होते हैं तो मोस्टली हम लोगों को ऑडिट एक्सपोजर मिलता है, टैक्स एक्सपोजर मिलता है, बट अगर आपकी इंटेंशन होती है कि आप किसी कॉर्पोरेट को ज्वाइन करेंगे तो वो एक्सपोजर उतना नहीं मिलता है. सो आई हैड टोल्ड माय बॉस दैट सर I will be looking forward for some industrial training opportunities and if I get I'd like to join. बट एट द सेम टाइम वो रिस्क बहुत होता है क्योंकि आपने जब फाइनल एग्जाम दिया है और रिजल्ट आपका अभी तक आया नहीं है तो यू डोंट नो कि आप उस एग्जाम को क्लियर करोगे या नहीं करोगे. तो अगर एग्जाम क्लियर हो गया तब तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर एग्जाम क्लियर नहीं हुआ तो कोई भी कंपनी आपको जनरली हायर नहीं करना चाहती है क्योंकि देन आप रिजल्ट अगर क्लियर नहीं हुआ तो फिर आपको वापस छुट्टी लेनी पड़ेगी एंड देन दे मे नॉट वांट इट. So I had still applied to PwC. मेरे पास I had a friend's call and he said कि एक opening है, if you want you can come down. So I had gone for the interview and my interview went for about 50 plus minutes. 50 minutes से ज़्यादा का interview था. And I had to convince them. उन्होंने बार-बार पूछा कि what if you don't clear your exams? I said, sir, see, we will only get to know once we take a chance on it, right? I mean, I cannot tell you right now. I can only tell you that my exam was good. So I got into PwC as an industrial trainee. एंड थैंकफुली मैंने नवंबर में एग्जाम दिया था, दिसंबर में पीडब्ल्यूसी ज्वाइन कर लिया, जनवरी में रिजल्ट आया, आई क्लियर्ड माय एग्जाम. सो माय इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग कंटिन्यूड and I ended up spending 4+ years there. Of course, during my stint with PwC, I had appeared for a lot of interviews with other companies, right? In over that 4 years of period, because like I said, मुझे कोई ज़्यादा कोई गाइड करने वाला नहीं मिला था. तो कभी अगर जब भी जॉब से थोड़ा सा लगता था कि अरे बोर हो रहे हैं या पता नहीं क्या करें, आई थिंक नाउ आई हैव रियलाइज्ड दैट इट हैपेंस इन ऑलमोस्ट एवरी कंपनी. आप किसी भी कंपनी में रहोगे 6 months 12 months के बीच बीच में वो स्पर्ट आता है कि आप कुछ इरिटेटेड फील करते हो, बोर्ड फील करते हो, फ्रस्ट्रेटेड फील करते हो, एंड देन वो अपने आप नीचे चला जाता है, अपने आप उस जॉब को फिर से एंजॉय करने लगते हैं, एंड दैट साइकिल समहाउ कंटिन्यू. दैट्स व्हाट आई फील. बट एट द सेम टाइम आई मस्ट टेल यू इट वाज अ वेरी वेरी एनरिचिंग एक्सपीरियंस. बहुत एक्सपोजर मिला, बहुत कुछ सीखने को मिला. So I ended up spending 4.5 years. So I joined as an industrial trainee. Once my results were out, once my articleship was over, I was eligible for campus placement. So my manager told me कि देखो, you want to go for campus placement, you go, but you should know that we are looking forward to retaining you. So I said, sir, but let me assess my value. So let me see if I am going for campus, can I get it? So अब जब मैं कैंपस में चला गया तो मेरे ऊपर ये था कि अगर मैं ऑफर लेटर लिए बिना चला गया यहाँ से तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, बिकॉज देन फिर वो एक इज्जत वाली बात हो जाती है, नहीं कह रहे गए थे कैंपस में कुछ हुआ नहीं, बोले थे मत जाओ करके. सो बट फाइनली I was shortlisted by 3 companies. I had taken one offer letter with, I mean, I knew that I will not be joining, so I immediately declined that also. But हाँ, ये था कि I have been shortlisted.
but yes, I ended up spending 4.5 years with PwC. I started with advisory as an industrial trainee, and then उसके बाद में भी PwC का एक offshore division है. So I was one of the founding members of that offshore division. uh, International exposure bhi mila. I went to Canada for some time, right? Formed 3 teams, brought in a lot of efficiencies, learned a lot of things. I'm still in touch with them. I mean, हम लोग उनके साथ में अभी भी बहुत well connected है. मतलब I left PwC in 2011 and हम लोग 2021 में बैठे हैं. But most of the people I had worked with, I am in touch with them. So yes, it was a wonderful experience. Let me ask you a personal question. What salary did you get at PwC when you joined it? What was Okay, your first salary? so when I joined as an industrial trainee, तो तब तो वो stipend होता था. उस समय हमारी stipend, the stipend that was fixed for me was 15,000. Per month. When I was absorbed as a full-time employee, then my salary was 6.6 plus, depending on how much I performed. Right, there was a variable component, so the fixed salary was 6.6 lakh. I mean, I can tell you now, मैं उस समय नहीं बता सकता था. हमारे बिल्कुल, मतलब you बिल्कुल, cannot disclose your salary, बिल्कुल, but yes, बिल्कुल, बिल्कुल. that is So how it was. 15 से 50 per month ये डिफरेंस हुआ था एज अ ट्रेनी से एज अ फुल टाइम एम्प्लॉय. Yeah, sort of. सॉर्ट ऑफ राइट. 6.6 यानी अगर मैं पकड़ू 60-70 हजार रुपया पकड़ लीजिए. सो 15,000 हाँ, रुपया तो पर मंथ से 60,000 रुपया पर मंथ उस जमाने में, आज से 15 साल पहले की बात होगी ये. हाँ, so I joined 2007, so 2008 में convert हुआ हूँगा. 2008 में कन्वर्ट होंगे. सो विकास जी, आज एक नॉर्मल सीए जब पास आउट होता है तो उसको कितनी सैलरी मिलती होगी? I, again, depends. देखिए, depends on which city you सिमिलर are काइंड ऑफ in. अ कंपनी, सिमिलर काइंड ऑफ अ कंपनी से No, पीडब्ल्यूसी so I आज think कितने पे लेती PwC, again, it would not be right on my part to say कि वो क्या salary देते हैं, but हाँ, I can tell you कि एक typical MNC would offer somewhere around anywhere between 7 and 9 lakh rupees today to a fresh CA. I'm talking about a very typical kind of a है role. एमएनसी? So, for example, if somebody joined a company in Bangalore, maybe they would be in the range of 9. अगर वो कोलकाता जैसे कंपनी सिटी में होंगे तो 7, 7.5. सिटी स्पेसिफिक रहेगा. निकिता, यू एग्री टू दिस विकास पॉइंट, या आपका एज अ फ्रेश यू हैव अ डिफरेंट एक्सपीरियंस, यू हैव डिफरेंट नॉलेज? योर अदर बैचमेट्स जो प्लेस हुए होंगे वो क्या सैलरी पे एवरेज प्लेस हुए? आपकी सैलरी नहीं पूछूंगा मैं, डोंट वरी. Sir, Vikas sir is right in this point because the salary more or less depends on the city. But now the companies have a culture that they fix the salaries and the salary is same whether you are in Bangalore or Kolkata or Pune or Mumbai, the salary is same for everyone. Okay. Means if it is a MNC, then only. And now if it is a specific region company, then the salary would differ as Vikas sir has told that in Kolkata it may be less, in Bangalore it would be very high. But if a particular you take a MNC having branches all over India, the salary would be same for the same level job. Okay, so somewhere between 50,000 to 70,000 per month is the salary even for freshers CAs even today. Is that true? आपके बाकी फ्रेंड्स वगैरह को भी उसी रेंज में मिली है या उससे कम में भी मिली Yes, sir. है? The average salary is around 60 to 75 only. 60 to 75,000 only. So boys and girls, note this point very clearly. A chartered accountant, pass out, fresher normally gets even today somewhere between that kind of a salary, which we have heard. But one point which Vikas very wonderfully mentioned, which I want to highlight it to all job seekers and people who are doing a job, is कि आप जॉब करते करते कभी कभी बोर होने लगते हो, तो उस समय नौकरी छोड़ने वाली बात नहीं होती है. उस समय कुछ ऐसा करने वाली बात होती है कि आप बेहतर कर सको, और नौकरी तभी छोड़ो जब दूसरी नौकरी आपके हाथ में हो. सो विकास जी, ईवाई से आपने अपना करियर कहाँ ले गए? 4 साल बाद, 5 साल बाद, फिर आप बीच में ईवाई में भी थे, सॉरी पीडब्ल्यूसी से आप फिर आगे बढ़े, तो फिर आप बीच में कहीं तो भी ईवाई भी पहुंचे थे और फिर आप एंटरप्रेन्योर बने. व्हाट इज दिस ऑल जर्नी अबाउट? इसके बारे में कुछ बताइए. So Madhi, I think so. When I had spent sufficient time at PwC, like I said, I had appeared for different interviews and कुछ एक offers मिले भी थे, but then I ended up declining them because I've always believed in loyalty for in the company in which you stay. So, for example, my dad is in service and he's been working in the same company for more than 40 years now. Same for my uncle. So I have seen that happening, and I think it means a lot. वो बहुत matter करता है. I mean, I don't believe in shifting too many jobs. So
After 4.5 years of working with PwC, I got a chance opportunity, right? So, and that was with ICA. I wouldn't have joined ICA, to be very honest, but I had the discussion with the chairman, and he gave me a role which was very, very challenging. And again, I had not heard of ICA before. It was a very chance kind of a discussion. पहले डिस्कशन पे तो शायद हमने दोनों लोगों ने ही डिसाइड कर लिया था कि नो इट्स नॉट गोना हैपन. But again, he called me. We had a second discussion, and then only because I thought that there is a very good challenge that I'm going to get, which was to set up a training vertical. So I felt that I would be able to do something different, and I had some interest in training. So I thought I will be able to contribute something very nice, because PwC में भी मैंने वैसा किया था कि I had formed 3 teams, और उस टीम को फॉर्म करके उसको ग्रो करके उस बिजनेस को मैच्योर करवाना, उसमें प्रोसेस ओरिएंटेशन करवाना, ऑप्टिमाइजेशन करवाना, I used to like that. So I got into ICA, and I was assigned one team member when I joined, and I spent another 4 years with ICA, and by the time I left, I had 36 team members with me. I was heading 6 verticals, right? And I mean, of course, we had some interaction when I was with ICA. So thoroughly enjoyed. So from an MNC which had operations in 160 countries and working with like hundreds of chartered accountants at the same time, I moved to a very desi, I mean, domestic, but still a national pan-India presence company in a completely different role, right? Got to see the ground level work. I traveled remotest parts of the country, right? And वहां पे हम लोग डील करते थे स्टूडेंट्स के साथ में जो कि अकाउंटेंट्स बनना चाहते थे, बट चार्टर्ड अकाउंटेंट्स उनको लगता था कि वो नहीं बन सकते. So उनको हम लोग ट्रेनिंग करवाते थे, and I was responsible for creating the curriculum, training the faculties, ensuring quality and all that. So got to see the real ground level work. So imagine from Canadian experience to, I mean, Indian like I experience, yeah, proper Indian. hardcore Indian desi experience, right? So I got that. So spent there for 4 years, but that's when I realized कि नहीं, uh, I I I felt that now I need to, since I have already made this business matured, right? There's not much for me to contribute. I mean, it's set, it's ready, the processes are optimized, the business is doing well, the technology is optimized, that I've done my piece of work. And then again, I had a very chance interaction with EY, and they said, Ki Vikash, we are building our INDES learning solutions practice, and it's a growing practice. So once again, felt another challenge, because that was again a 6-member team there, and that was a very growing practice again. So वहाँ पे काफी कुछ contribute करने की opportunity दिख रही थी. So I moved to Gurgaon. I left my family here in Kolkata. I moved to Gurgaon alone, because I didn't know कि कैसा environment रहेगा, किस तरह के challenges रहेंगे. Plus my daughter was already in school by that time. My parents are here, so I mean, I wanted to have a support system for them. So my wife stayed back, and I joined Gurgaon, EY Gurgaon, into the learning solutions fast practice. So हम लोग वहाँ पे INDES implementation करते थे, और learning solutions पे, finance पे, INDES पे, IFRS पे काम करते थे. And once again, very enriching experience. बहुत कुछ सीखा, काफी कुछ contribute किया, and thankfully again, so EY allowed me to come back to Kolkata, operate from Kolkata. So I came back to Kolkata, operated from their Kolkata office, and so total I spent 1.5 years. But then by that time, वो entrepreneurship का कीड़ा काट चुका था बहुत जोर से, and of course, I mean, for an EY practice, that was already doing okay. So I spoke to my partner, my director, and I said कि sir कुछ अपना करने का मन है. He said, I mean, of course, we had that interaction, and with their blessings, with their support, I started my own business at Omnifin Solutions, and Wonderful. here I am. Wow. So I'll come back to you, Vikash, talk about your entrepreneurial experience, but I'll just go to Nikita. Nikita, being a CA 1.5 year into this, for the next 5 years, 10 years, I know you would not say कि मैं ये company छोड़ने वाली हूँ, but how do you see yourself growing, both प्रोफेशनली एज वेल एज एकेडमिकली, कि पढ़ाई लिखाई और करनी पड़ेगी या नहीं, जितना पढ़ लिया अब काफी, अब कोई पढ़ना लिखना जरूरी नहीं है और कुछ आवश्यकता नहीं है पढ़ने की, और प्रोफेशनली अब मैं पहुंच गई हूँ, आई हैव रीच्ड, और कुछ ग्रोथ नहीं है. जैसे विकास जी ने कहा उनके पापा, उनके अंकल ने 40 साल एक ही कंपनी में नौकरी की है, तो अब भी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड से रिटायर ही होंगी. व्हाट इज योर प्लान?
सर जैसे आप एजुकेशन का बोले हैं, तो वो लर्निंग तो ऑनगोइंग प्रोसेस है। वो तो एक बार सीए पे कदम रख लिया तो ये तो भूल जाना है कि आगे और पढ़ना नहीं होगा, क्योंकि लॉज डेली चेंज होते हैं, डेली कुछ ना कुछ नए अमेंडमेंट्स आते रहते हैं। तो सीए की वैल्यू तब तक ही है जब तक आपके पास नॉलेज अपडेटेड है। अगर आप अपना नॉलेज अपडेट करना बंद कर दिए तो आप भी एक मतलब पुराने कीड़े टाइप्स हो जाओगे, कि आप कि फिर वहां कोई वो वैल्यू नहीं बचेगी, क्योंकि आपकी नॉलेज ही अपडेटेड नहीं है। तो इसीलिए पढ़ाई तो पीछा नहीं छोड़ने वाली, पढ़ाई तो करते ही रहना है। और जहां तक भारत इलेक्ट्रॉनिक्स की बात है, टिल टुडे ऐसा एक भी दिन नहीं हुआ कि मुझे ऐसा लगा हो कि मैं कुछ सीख नहीं रही हूँ नया। एवरी डे आई एम लर्निंग समथिंग न्यू। टिल टुडे आई हैव नेवर फेल्ट दैट कि अरे यार वही सेम काम है, वैसा एक भी दिन नहीं हुआ। एंड द वर्क एनवायरमेंट विच दिस कंपनी इज प्रोवाइडिंग मी इज रियली वेरी गुड। I means I'm lucky in this sense because if I don't like a particular work, my boss is means very kind enough that okay, you don't like this, you want to have exposure in some other field, okay, we will switch you there. So वो वर्क फ्लेक्सिबिलिटी है। ऐसा नहीं है कि आपको एक रोल असाइन हो गया तो आप सिर्फ उसी में काम करोगे। आपको अगर सीखने की इच्छा हो तो आप दूसरे काम भी सीख सकते हो, आपको कोई मना नहीं करेगा। नॉर्मली बड़े ऑर्गेनाइजेशंस में आपको इतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं मिलती है, बट यहाँ मुझे वो फ्लेक्सिबिलिटी मिल रही है। तो एज ऑफ नाउ कि मुझे तो वंडरफुल। अभी रिसेंट में तो मतलब ऐसे जाने का कोई इरादा नहीं है। नहीं, मैं जाने की बात कर भी नहीं रहा हूँ निकिता। माय वन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट विच आई हैव पिक्ड अप फ्रॉम निकिता इज फॉर बॉयज एंड गर्ल्स यू टू नोट डाउन इज, निकिता ने बिल्कुल सिंपल भाषा में कहा कि भैया सीए में ओल्ड इज गोल्ड नहीं होता है। अगर आप ओल्ड हो चुके हो और आपने अपडेट करना बंद कर दिया है तो यू आर आउटडेटेड और आपकी कोई वैल्यू नहीं है। और विकास जी भी शायद एग्री करेंगे कि भैया अगर आप प्रैक्टिसिंग सीए हो या अगर आप एक चार्टर्ड अकाउंटिंग का काम कर रहे हो तो हर साल जो नए रूल्स रेगुलेशंस आते रहते हैं, जो फाइनेंस डिपार्टमेंट कुछ ना कुछ बदलता रहता है, वो अगर आप नहीं सीखे तो क्या सीखे, फिर आप कोई काम के नहीं हो। सो दैट्स वन वेरी Sumit, I इंपॉर्टेंट। think या no, no, विकास जी। very important. Sumit, I think so. I want to highlight here that when I was studying CA in 2007, today all the students would be studying Ind AS or IFRS. It was hardly there in 2007. So the entire accounting landscape, financial reporting landscape has changed from then to now, right? जब मैं अगर मैं इनडायरेक्ट टैक्स की बात करूं तो हमारे टाइम पे सर्विस टैक्स में 36 सर्विसेज वर टैक्सेबल एंड वो मूव कर रहे थे 105 सर्विसेज की तरफ, कितने सर्विसेज टैक्सेबल होंगे। आज के डेट पे सर्विस टैक्स, सेंट्रल एक्साइज, वैट इज नॉट देयर। द इंटायर इनडायरेक्ट टैक्स स्ट्रक्चर हैज चेंज टू जीएसटी, राइट? हम लोगों ने लॉ के अंदर में कंपनीज एक्ट 1956 पढ़ा था। दैट वाज द मेजॉरिटी ऑफ द लॉ दैट वाज देयर। टुडे कंपनीज एक्ट 2013 आ गया है। सो समझ लीजिए आप 60-70% ऑफ लॉ दैट वी स्टडीड हैज कंप्लीटली चेंज्ड, राइट? सो I mean, when Nikita is saying that you have to continuously keep yourself updated, otherwise तो आपकी वैल्यू बिल्कुल जीरो हो जानी है। So you're right. I mean, बिल्कुल बिल्कुल। एक यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन आ रहा है मेरे दिमाग में जो मैं लॉ से यहाँ पे रिलेट करना चाह रहा हूँ कि लॉयर्स भी मेरी तरफ पीछे बड़ी बड़ी किताबें लगाते थे। चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास भी जाओ तो आपके ऑफिस में बड़ी बड़ी मोटी मोटी किताबें होती हैं सारे रूल्स रेगुलेशंस की, और लॉयर्स के पास भी मैंने देखी है। और मैंने एक और चीज सुनी है जो आपसे पूछना चाहूंगा कि जो एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इट विल मेक द लॉयर्स लाइफ वेरी इजी और मे बी रिप्लेस द लॉयर टिल सम एक्सटेंट। तो वैसा कुछ अकाउंटिंग फाइनेंस में भी चांसेस हैं कि एआई जो है वो काफी कुछ ऑटोमेट कर देगा और सीए की लाइफ या तो बहुत आसान हो जाएगी या आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ऐसा कुछ? सर देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है या मशीन लर्निंग जो है या आप डेटा एनालिटिक्स की बात करते हैं, दे वुड लर्न, दैट टेक्नोलॉजी विल लर्न based on what we give them to learn, right? It will not learn on its own. So for artificial intelligence to be intelligent, it requires data, it requires input. And where will it get these inputs from? It will get these inputs from us as individuals. Second, if we are, and who's going to use it? So first of all, who's going to give them inputs to become intelligent? We. And who's going to use their intelligence? We, right? So we have to be relevant at all times,
and then it is going to come from us and it is going to come to us. So there's no reason to be scared of them. But yes, you definitely have to be updated at every point in time. मैं थोड़ी देर पहले अपने पापा की एग्जांपल आपको बता रहा था, मैं फिर बताता हूँ. So he's come from Rajasthan. He studied in Hindi medium, right? And today he operates computer, he operates an iPad, he operates a phone, which he was not taught when he was in school, college, when he joined work. I mean, I think computers came in after 15, 20 years of his working. But today he has to work on computers only. आज वो खाता में नहीं लिख सकते. He also does accounting. So I mean, that's the nature of who we are as human beings, right? We have to constantly keep ourselves updated, and we cannot be afraid of whatever is going to come to us, because जो भी आएगा वो हमारे लिए आएगा ultimately. So we have to embrace it. We have to get adapted to it. Wow. If we don't, then who are we, right? So boys and girls, remember this, you have to be adaptable. और AI आपकी जॉब छीन लेगा ऐसा नहीं है, आपको AI को इंटेलिजेंट करना है. Let me shift it to one more important thing which I'll come to Nikita first and then to Vikas. Nikita, आपका एक typical day कैसा होता है? What do you do usually on an average day? आपका सुबह से लेकर के रात तक का, बीच में दिन में आपके कामों का एक क्या होता है, especially in the office hours? What do you typically, what is your average day like, typical day like? चाय कॉफी पीने के अलावा ऑफिस में काम भी कुछ, मतलब कैसे होता है टिपिकल डे? बेसिकली ऑफिस स्टार्ट होते ही पहले तो ये रहता है कि आज की टू डू लिस्ट क्या है, कि प्रायोरिटीज क्या है, आज कौन सा टास्क पहले कौन सा खत्म करना है, और वो भी 10 कामों में से कौन सा फर्स्ट करना है. सो बेसिकली माय डे वुड स्टार्ट विथ चेकिंग माय ईमेल्स कि what are the mails, both internal as well as external, because we are having separate system for internal mails and external. So based on that I used to prioritize that, okay, आज ये काम ज्यादा important है, आज इसकी ड्यू डेट्स है तो ये पहले खत्म होने हैं, आज इधर डॉक्यूमेंट्स जाना ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो वो डॉक्यूमेंट्स रेलेवेंट कंप्लीट होने चाहिए. एंड आई यूज टू मेक श्योर दैट वो डॉक्यूमेंट्स टाइमली वहां पहुंचे. इट शुड नॉट बी दैट next day my senior is telling to me that Nikita, this work is not completed. So I would not like that. So basically I means prepare one calendar every day that okay, by this time I have to complete this work. So the office hours goes like this only. So typically जब आप काम कंप्लीट कर लेते हो, उसके अलावा भी आपको कोई रिकॉर्डिंग या रिपोर्टिंग सिस्टम भी होता है कि आप कैसे आपका काम कंप्लीट हो गया ये अपडेट करते हो? सर वो टोटली सेल्फ मॉनिटरिंग बेसिस पे है कि आप अपना काम कब खत्म कर रहे हो, कैसे खत्म कर रहे हो. इट मे बी सम फाइन डे दैट योर बॉस इज आस्किंग टू यू, ओके निकिता, इज दिस वर्क कंप्लीटेड और नॉट, एंड दैट टाइम my own personal view is that it should be always a yes and never a no. That no sir, yes, I have completed this, and till now I am following this principle of mine, that never I will let my seniors down. Wonderful. Thank you, Nikita. Vikas ji, how is your typical day being an entrepreneur? जब से आप एंटरप्रेन्योर बने हैं, आपका टिपिकल डे क्या होता है, क्या करते हैं on average day? Sumit, the problem with me being an entrepreneur is that I don't have a typical day. My every day is unique. So, for example, Nikita said that we can have a to-do list. So I make a to-do list. I've always tried to be that organized. But uh, the typical thing about being an entrepreneur is that there is nothing constant, there is nothing fixed, there is nothing certain. So it might be a little long answer, but that's how I have to express or explain that. So I run a small team now. My team is about 12 members, and it keeps going up and down depending on different projects, consultants, interns, and so on. And I typically work with entry-level professionals. So, and we have two lines of services. We have talent management and finance. And so within talent management, we do recruitment and training and content development and so on. And within finance, we do business valuation and some consulting. So it depends on what kind of work I have at hand as a priority. But some of the things that I keep in mind is that हमारे क्लाइंट के डेडलाइंस होते हैं कि हमको इतने दिन में एक कैंडिडेट चाहिए, या इस दिन हमको ये कंटेंट रेडी चाहिए, या हमको इस दिन एक वैल्यूएशन रिपोर्ट चाहिए, या इस दिन हमको एक ओपिनियन चाहिए. So we always have that priority list, and we can never let our clients down. So like Nikita said, it always has to be a yes, right? So if the client is asking us if I have a deadline for Monday, right,
the client should get it before close of day on Monday. So हमारे जो जो targets होते हैं वो targets हमको accordingly set करने पड़ते हैं. So we as a team, of course, we all put in everything to ensure that the deadlines are met. Now, that's for the team, that's for the company, right? As an individual, I have to manage a team. तो टीम के कुछ ट्रबल शूटिंग इश्यूज होते हैं, किसी को कुछ समझना है तो मुझे उनको बताना पड़ता है, मुझे बिजनेस डेवलपमेंट करना पड़ता है. सो वी हैव टू आई हैव टू कॉन्स्टेंटली लुक फॉर मोर बिजनेसेस. बीइंग अ टेक्नो कमर्शियल पर्सन, आई हैव टू लुक एट अ लॉट ऑफ टेक्निकल एस्पेक्ट्स की वैल्यूएशन में क्या कॉम्प्लेक्सिटीज आ रही हैं, रिपोर्ट्स को रिव्यू करना है, राइट? क्लाइंट्स के पास में वो गया है या नहीं गया, फाइनेंस को मॉनिटर करना है, एचआर को मॉनिटर करना है, राइट? अपनी ऑर्डर फनल देखनी है कि हमारे पास सही पाइपलाइन है या नहीं है. So while I have a great team, right, which is very very committed and I'm very blessed with that, but at the same time, being an entrepreneur, मुझे वो सारी चीजों का ध्यान रखना होता है. So I think one thing which people think about entrepreneurs, some people think कि entrepreneurs बहुत free हो सकते हैं, some think कि वो बहुत busy होते हैं. I am a master of my own time with respect to my team members. So I mean, nobody tells me कि मुझे क्या करना है, but at the same time, that is what makes me very very busy. So I'm an extremely busy person, and yeah, it's always troubleshooting, it's always running. So as a very simple example, yesterday it was my mom's birthday, and I had a training in the morning, and I had three deliverables during the day which I had to close, right? So I completed my training, and then I had to complete those deliverables, and then I had to go for dinner. Right now, Kolkata में अभी dinner कैसा है कि 8 o'clock restaurants have to be closed. So 8 बजे आपको खा के निकल जाना है. So my family is waiting at one place, right? वो कह रहे हैं कि आप कब आओगे. So मुझे calls करते हुए उसको manage करना है. रिपोर्ट टाइम पे जाना चाहिए, बिकॉज क्लाइंट्स को ये नहीं बोल सकते कि मैं अपनी फैमिली के साथ डिनर पे जा रहा हूँ, राइट? फैमिली को नहीं, आई मीन ऑफ कोर्स माय फैमिली इज वेरी वेरी अंडरस्टैंडिंग, बट वी हैव टू अकोमोडेट ऑल ऑफ दैट. सो यस, इट्स अ मेहम, राइट? आई मीन बहुत प्रेशर रहता है कभी कभी. देयर आर टाइम्स व्हेन आई एम नॉट स्लीपिंग टिल 3 AM 4 AM, राइट? 3 बजे सोए और सुबह 7 बजे 8 बजे उठ जाना होता है, 10 बजे वापस जाओ, बिकॉज नेक्स्ट डे का प्रेशर ऑलरेडी अलाइंड है. And then there are times when I can take a 3-minute nap in the office, right? So yeah, so I think it's a lot of pressure, but at the same time, it's very enriching. It's very fulfilling. कभी ये feel नहीं होता कि अरे क्या कर रहे हैं यार. I mean, because I'm doing what I want to do, right? What I have chosen to do, and the joy of being able to um, have people, right? So I mean, if I have a 12-member team, एक तो वो मेरी extended family है. Plus I'm able to provide jobs to them, and plus my business also involves providing jobs to hundreds of people every year. So वो बहुत satisfying होता है, बहुत ज़्यादा satisfying होता है. That's a typical day, like. Wow. So let me just take you to one more step ahead, and then I'll come to Nikita as well with the same question. Is what are your challenges being a chartered accountant or being a CFA? Like क्या challenges हैं? Is there any challenges which you look at as कि यार CA बन गया लेकिन ये तकलीफ हमेशा रहेगी साथ में CA बनने के कारण? नहीं सर, मतलब ऑनेस्टली प्रोफेशन में सोचो तो चैलेंज ही चैलेंज है. मुझे तो कोई चैलेंज नहीं दिखता. आई थिंक आई एम सो ब्लेस्ड. आई एम सो ब्लेस्ड कि आई हैव अ डिग्री, आई हैव मोर देन वन डिग्रीज. हम लोग कहीं पे भी जाते हैं तो आई कैन ऑलवेज से दैट आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड पीपल रिस्पेक्ट यू फॉर दैट. हम लोग अपना नॉलेज डेमोन्स्ट्रेट कर पाते हैं, हम लोग लोगों की हेल्प कर पाते हैं. हाँ, अगर मुझे खोजना ही हो कि क्या चैलेंजेस हैं, सो वो चैलेंज होता है दैट समटाइम्स पीपल स्टीरियोटाइप यू. पीपल आपको स्टीरियोटाइप कर देते हैं कि अरे नहीं यार, आप तो हमारा टैक्स बचा ही दोगे, या आप अनएथिकली बचा दोगे, या आप ऐसे मैनिपुलेट कर सकते हो समटाइम्स. सो वो कहीं ना कहीं वो जो एक इमेज बिल्डिंग हो जाती है, या लोगों का एक्सपेक्टेशन मैनेज करना वेरी. सो एक छोटे से एग्जांपल, तो ऑन अ लाइटर नोट, राइट? सो आफ्टर आई हैड बिकम अ सीए, हम लोग कुछ फ्रेंड्स थे जो एक फ्रेंड के घर जा रहे थे. एंड आई मीन आई एम टॉकिंग अबाउट 2007-8, राइट? जहाँ पे जीपीएस उतना पॉपुलर नहीं था हमारे टाइम पे. सो उसका घर कुछ कोने में कहीं, मतलब इट वाज डिफिकल्टी हुई हमको उसके घर पहुंचने में. एंड जैसे हम उसके घर पहुंचे तो हमारी जो फ्रेंड थी उसका बोलना था कि तुम लोग सब चार्टर्ड अकाउंटेंट बन के घर खोजना नहीं आते. अच्छा, लेकर हम लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट है, पोस्टमैन थोड़ी हैं, राइट? सो उस तरह का एक्सपेक्टेशन. अभी आप जैसे ही सीए बन जाते हो तो आपको टैक्स में ये नहीं आता, अरे तुम सीए है तुमको ये नहीं आता. कम ऑन, आई मीन जरूरी थोड़ी है कि मैं कोई ब्रह्मा थोड़ी हूँ जो मुझे सब कुछ आएगा. तो आई थिंक वो एक एक्सपेक्टेशन कि आपको सब कुछ आता होगा, या वो एक एक्सपेक्टेशन कि आप कुछ गलत भी कर लेते होंगे, राइट? दैट एथिकल थिंग, राइट? सो
of course, there are some people who might have not done the right thing, but there are 3 lakh plus chartered accountants. And I think we are very, very proud community. I mean, हम लोग इतना contribute कर पाते हैं लोगों के life पे, even to the economy, कि अगर 3 लाख में से 30 लोगों ने अगर सही काम नहीं किया है, so we don't blame the entire community or the entire fraternity for it, right? So yeah, कोई challenge नहीं है सर, मुझे कोई challenge नहीं दिखता है. Nikita, any challenge? Yes, I also agree with Vikas sir in it because अपना अपना नजरिया होता है. किसी के लिए वो चैलेंज हो सकता है, किसी दूसरे बंदे के लिए वो अपॉर्चुनिटी हो सकती है. जैसे जब अब जीएसटी इम्प्लीमेंट हुआ, उस टाइम पे मेरी स्टडी फेज चल रही थी. मैंने एक लेवल एग्जाम दिया पुराने लॉज में. अगेन 9 months बाद मेरे एग्जाम से एंड इट वाज दिस जीएसटी लॉ. नाउ जीएसटी जब उस टाइम पे कुछ सीएस बोले नहीं बहुत चैलेंज है, हो नहीं रहा है, बट फॉर सम इट बिकेम एन अपॉर्चुनिटी एंड people started practicing in it and it gave immense opportunities to them. So कोई एक पर्टिकुलर सिचुएशन आपके लिए चैलेंज है या अपॉर्चुनिटी, आपका नजरिया बताता है. तो आप किसी के लिए वो चैलेंज है, किसी के लिए वो अपॉर्चुनिटी है. मे बी बोथ, मे बी फ्रॉम द सेम बैकग्राउंड, एवरीथिंग सेम, बट इट ऑल डिपेंड्स अपॉन हाउ यू परसीव दिस सिचुएशन. Wow, wow, wow. This is so I think interesting. Sumiji, so just to add to that, I mean, see, हम लोग इसके पहले भी ये बात कर रहे थे ना, that learning is constant. I mean, learning is the only constant. You have to constantly keep on learning and keep yourself updated. एक कहीं ना कहीं अगर ये जो challenges है, कुछ नया आ गया और उसके लिए हमको अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा. अगर वो नया नहीं आएगा तो हम भी तो आउटडेट हो जाएंगे ना सर. एक ही चीजों को हम लोग अगर कॉन्स्टेंटली अप्लाई करते जाएंगे, so people will catch up. So I think, so for example, आज मैं registered valuer हूँ. And I was one of the first registered valuers. I think when I became a registered valuer, my position was 93 in the entire country. Right? So, and today I have written 2 books on valuation. मैंने 2000 से ज्यादा valuation लोगों को valuation पे ट्रेनिंग दी है, वीडियोस बनाए हैं, 500 से ज्यादा valuation engagements किए हैं. So अगर मुझे वो चैलेंज लग रहा होता तो ये यहाँ तक थोड़ा ना पहुंचते. So I think any challenge is at the end of the day an opportunity, right? Because अगर हम उस पे capitalize कर सकते हैं तो हमको वो pole position मिलेगा, हमको वो advantage मिलेगा, वो first mover advantage मिलेगा, हम अपनी expertise demonstrate कर पाएंगे. Right? So we need to capitalize on that. At the same time, you don't have to be excellent at everything. So I don't consider myself to be a champion of direct tax or a champion of indirect tax. No. So if Nikita is a champion at law, I would network with her. मुझे कोई law के बारे में कुछ query आएगी, so I'll reach out to her, right? If you are a champion of direct tax, I will reach out to you, and we will share that knowledge. So, like I said, I mean, at the end of the day, it's still an opportunity, right? Wow. Boys and girls, look at this very, very clearly, very, very in-depth knowledge. बिल्कुल ब्रह्मा की तरह वाणी आई है. That what you look at it, whether it is a challenge or an opportunity, it is आपका नजरिया, right? Laws change, and that is an opportunity for a CA. If you look at it कि क्या हर बार laws change हो रहे हैं, हमको फिर से पढ़ना पड़ रहा है, अपडेट करना पड़ रहा है, ये तो हमारे लिए चैलेंज हो गया, तो फिर सर आप गलत जगह पे आ गए हैं. बट इफ यू लुक एट इट इज एन अपॉर्चुनिटी कि अरे वाह, गवर्नमेंट ने फिर लॉ बदल दिया, चलो फिर से एनकैश करेंगे, फिर से लोगों की हमारी आवश्यकता पड़ेगी, देन यू आर लुकिंग एट इट इन द राइट वे. समथिंग सिमिलर व्हिच हैपेंस इन द आईटी वर्ल्ड एज वेल, इजंट इट? आईटी में नया नया सॉफ्टवेयर आता जाता है, नया नया हार्डवेयर आता जाता है, नया नया आप सीखते जाते हो, नया नया सिखाते जाते हो और करते जाते हो. दैट इज समथिंग व्हिच चेंजेस देयर. वाह. Okay, now let me take this opportunity now to bring to you one more interesting question, which will be towards our end, that we would get into some message for our students. जो यहाँ इतने सारे बच्चे हैं, before I get into the rapid fire questions, कि if these boys and girls have to carry one message from you as a experienced chartered accountant and a CFA, Vikash ji, what is that message for them who are aspiring to be a CA? कि क्यों आना चाहिए CA फील्ड में, या किसने आना चाहिए? सिर्फ मुझे CA करना पसंद है इसीलिए आना चाहिए, या what is that characteristic जो मुझ में होना चाहिए as a CA, जिसकी वजह से मैंने उसमें आना चाहिए? What should be that reason for getting into this workforce? Sir, so
tricky question because there may not be one thing. So some of the things we have discussed during our discussion today. One is to be able to constantly learn. I have spoken about ensuring that you are on the ethical side of the table in all your dealings. So, et- I mean, ethical behavior and constant learning are definitely two of the very strong pillars. Of course, you have to have an objective which is exceptional client service. But I think whether you do a CA or you do a CFA or a CS or a CMA, so दो चीजें मैं यहाँ पे बोलना चाहूंगा. पहली बात, uh, I did multiple courses because I liked to do it. मुझे पढ़ना पसंद है. मैं आज भी PhD कर रहा हूँ. Not because मुझे उस डिग्री की जरूरत है, बट बिकॉज मुझे पढ़ना पसंद है. मैं उस फील्ड में और एक्सेल करना चाहता हूँ, राइट. सो बहुत लोग मुझे कहते हैं कि सर मैं सिर्फ सीए कर रहा हूँ, दैट इज विल दैट बी इनफ. सो आई वन ऑफ द थिंग दैट आई वांट टू हाईलाइट इज कि आपको एक ही डिग्री का पैसा मिलेगा, राइट. आपको एक ही डिग्री एट एनी गिवन पॉइंट इन टाइम, there is only one degree which will give you a bread and butter, and doing CA in itself or only CS or only CMA or only CFA are all very important and respectable degrees in themselves, and there is a market for each one of them, right. There's a big enough market for each one of them. So, and I'm sure Nikita must have thought the same thing. I mean, ऐसा नहीं है कि CS को 5 लाख की सैलरी मिलती है और CA को 5 लाख की सैलरी मिलती है और CMA को 5 लाख की सैलरी मिलती है, तो आप तीनों कर लेंगे तो आपको 15 मिल जाएगा. ऐसा नहीं है, आपको 5 ही मिलेगा, राइट. 5 से 5.5 भी शायद नहीं होगा. सो दैट इज वन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड सेकेंड, आई थिंक what I mean, yeah, so I think that's one. There's one more thing which I wanted to say, but I think I've forgotten that, so I'll come back to that if I remember. बिल्कुल बिल्कुल. निकिता, तब तक आपकी बारी. What message would you like to give to people who are aspiring to be a CA? क्यों बनना चाहिए लोगों ने CA? बनना चाहिए क्या? As correctly said by Vikash sir, that आप चाहे CA कर लो, CS कर लो, CMA कर लो, CFA कर लो, आपको पैसे एक ही डिग्री के मिलेंगे. जैसे मैंने भारत इलेक्ट्रॉनिक्स ज्वाइन किया है, तो एज अ CA, CS एंड CMA नहीं ज्वाइन किया है, ओनली एज अ CA ही ज्वाइन किया है. मेरा जो यहाँ प्लेसमेंट हुआ है थ्रू ICI कैंपस प्लेसमेंट हुआ है. सो इसीलिए ये मिसकंसेप्शन नहीं रहने चाहिए माइंड में कि नहीं मैं 2 डिग्री करूंगी, 3 डिग्री करूंगी तो मुझे ज्यादा मिलेगा. एज सच कुछ नहीं है. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो स्टूडेंट्स को अपने माइंड में रखनी चाहिए कि आप झूठ दूसरे से बोल सकते हो, बट अपने आप से कभी झूठ नहीं बोल सकते. जैसे अगर आप किसी दिन कुछ टारगेट ले लिए कि आज मुझे ये करना है, सपोज मुझे 10 टॉपिक्स आज रिवाइज करना है, आप बाकी सबको झूठ बोल सकते हो. आप अपने पेरेंट्स को, फ्रेंड्स को झूठ बोल सकते हो, नहीं मैंने आज 10 टॉपिक्स कर लिए, 15 टॉपिक्स कर लिए. But at the end of the day, your heart knows how much you have studied, whether it is 5 topics or 10 topics. So never lie to yourself. Otherwise, you will feel bad about it at the end of the day. So अपने आप से कभी झूठ मत बोलो. एंड सेकेंडली, जैसे हो सकता है कि किसी को फर्स्ट लेवल में सक्सेस मिल जाए, किसी को अटेम्प्ट्स लग जाए. सो उसके लिए मतलब आपको स्टिफ नहीं हो जाना, आपके अंदर ईगो नहीं आना चाहिए. ईगो इश्यूज कभी नहीं होने चाहिए, क्योंकि जनरली ये देखा जाता है कि ओके फर्स्ट लेवल क्लियर हो गया, अरे मेरा ये क्लियर हो गया, मेरे फ्रेंड्स का नहीं हुआ. तो ये चीज नहीं आनी चाहिए. मैंने मतलब मेरी स्कूल डेज में जब मैं +2 लेवल पे थी, मुझे मेरे टीचर ने एक बात कही थी और आज तक मैं उसे फॉलो करती हूँ. उन्होंने मुझे मतलब लाइन कही थी कि निकिता, ऑलवेज बी लाइक ग्रास एंड डोंट एवर ट्राई टू बिकम अ ट्री, because whenever storm comes the trees fall down first but the grass remains unaffected. So always be tender like grass and keep growing, keep learning. So I would tell all the young aspirants that keep learning, keep growing, and never lie to yourself. Wonderful, wonderful, wonderful. Another Brahmastra coming your way, boys and girls. Be flexible. Grass is more important than a tree. Yes, it's always tender, it's always flexible, and that's what we need. निकिता, विकास जी, एक और सवाल दिल में आता है बच्चों के साइड से कि कितने अटेम्प्ट्स एवरेजली उन लोगों को लगते हैं टू क्लियर द एंटायर सीए पार्ट ऑफ इट? कितने साल लग जाते हैं, कितने अटेम्प्ट्स लग जाते हैं पास करने में एवरेजली? Not that how many attempts did you take, but averagely कितना लग जाता है? नहीं सुमित, I think that is the most irrelevant thing in the entire CA curriculum.
हम लोगों ने उसको इतना बड़ा बना दिया है कि वो एक डिसाइडिंग फैक्टर हो गया, वो एक टॉकिंग पॉइंट हो गया अमंगस्ट ऑल द स्टूडेंट्स। आई थिंक इट्स कंप्लीटली इररिलेवेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल, कितने अटेम्प्ट्स लगते हैं ऑन एन एवरेज, इट उसका कोई, आई मीन ऑफ कोर्स इट इज, सो इफ एनी स्टूडेंट हैज दैट क्वेश्चन इन माइंड, राइट, ये क्वेश्चन उनके दिमाग में होना ही नहीं चाहिए, बिकॉज वो अपने अटेम्प्ट्स के बारे में चिंता करे रादर देन द एवरेज अटेम्प्ट्स, राइट। अगर वो मेरे दिमाग में कंसिडरेशन रहा होता तो शायद मैं सीए करता ही नहीं, राइट। सो मुझे ये देखना था कि मुझे ये कोर्स कंप्लीट करना है, इस और जब तक मैं सीए में एंटर किया था, आई हैव ऑलवेज बीन अ वेरी एवरेज स्टूडेंट, राइट। सो आई ऑलवेज फेल्ट, तो मुझे ये था कि मुझे इस कोर्स को कंप्लीट करना है। हो सकता है एक अटेम्प्ट लगेगा, हो सकता है एक से ज्यादा लगेगा, बट आई ऑलवेज फेल्ट व्हाट इज इट दैट आई एम गोइंग टू गेट आफ्टर आई बिकम अ सीए, रादर देन हाउ डिफिकल्ट द जर्नी इज गोइंग टू बी, राइट। सो उस पर फोकस करें कि मेरे को उस पार क्या मिलेगा, और उस पर फोकस किया जाए। दूसरा, पता है क्या होता है सर, मैं जैसे हम लोग रिक्रूटमेंट भी कराते हैं, या मैं बहुत सारे सीए स्टूडेंट्स को भी जब ट्रेनिंग देता हूँ, तो मैं उनको भी कहता हूँ, वो पूछते हैं सर मेरा 7 अटेम्प्ट हो गया सर, सीए बंद तो गया लेकिन 7 अटेम्प्ट हो गया, अब क्या करें। तो मेरा उनको लाइट स्पिरिटेड आंसर ये होता है कि भाई एक काम कर, तू अपनी सीए डिग्री वापस, आई मीन व्हाट वुड यू डू, व्हाई आर यू वरीड अबाउट कि आपका 7 अटेम्प्ट हो गया, यू शुड बी सेलिब्रेटिंग कि अब आप सीए बन गए। हम लोग क्या करते हैं ना, वो स्टूडेंट्स वो अपने अटेम्प्ट्स को सामने ले आते हैं कि सर देखो मैं सीए तो बन गया हूँ, लेकिन देख लो मेरे को 7 अटेम्प्ट लगा है, बताओ मुझे हायर करना चाहते हो कि नहीं चाहते हो, आर यू श्योर यू वांट टू हायर मी, राइट। वो कंपनी को फर्क नहीं भी पड़ता होगा तो उनको पढ़ने लगता है। सो लेस देन 1% ऑफ द कंपनीज केयर अबाउट योर नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स, राइट। सो यू शुड नॉट केयर अबाउट योर नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स, आप अपना बेस्ट दीजिए, राइट। निकिता ने कुछ इंटरेस्टिंग टिप्स बताए हैं, आप उसको फॉलो करिए, कॉन्स्टेंटली लर्न करिए। अपने, मैंने आपको बताया कि आप अपनी आर्टिकलशिप और अपने करिकुलम को कनेक्ट करने की कोशिश करें। आई थिंक निकिता ऑल्सो एंडोर्स दैट, सो दैट शोज कि 15 साल के बाद में भी वो कॉन्सेप्ट अप्लाई करता है आज भी, राइट। सो डू दैट एंड focus on clearing the exam rather than what you have not cleared. So always count your blessings, right? And कहीं ना कहीं इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टार्ट अर्निंग ऑल्सो, बिकॉज अभी ऑफ लेट हम लोग एक ट्रेंड देख रहे हैं कि वो स्टूडेंट्स जो है वो 25, 26, 27, 28 साल की उम्र तक वो पढ़ ही रहे हैं, राइट। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस एज अ कंट्री एंड यू एज एन इंडिविजुअल, कि आप अपने आप को प्रोडक्टिव बनाएं। इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी डिफिकल्ट जब आप काम और पढ़ाई एक साथ कर रहे हैं, बट आप उसको कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे तो आपकी पढ़ाई भी इजी होगी और आप प्रोडक्टिव भी बनेंगे, राइट। एक 28 साल की उम्र में अगर आप जॉब ज्वाइन करते हैं तो इट्स टू लेट फॉर यू टू एंटर इनटू द मार्केट। द कंट्री हैज लॉस्ट अ लॉट ऑफ जीडीपी एंड इकोनॉमी इन द प्रोसेस, राइट, बिकॉज लोग लेट मार्केट में एंटर कर रहे हैं। सो अपनी शिद्दत से पढ़ाई करिए, अपने पॉजिटिव आउटकम्स पे फोकस करिए रादर देन कि कितने अटेम्प्ट्स लगेंगे, राइट। अगर मैं बन सकता हूं तो आप भी बन सकते हैं, मैं तो इतना जानता हूँ, राइट। सो आप उसको सही तरीके से लीजिए एंड कीप स्टे बीइंग प्रोडक्टिव एंड एथिकल। आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो आजकल वो पिक्चर में देख देख करके हम लोग ये सीख गए हैं कि अरे आजकल तो 6 महीने में अपनी, क्या कहते हैं वो बोलते हैं ना, 40 साल के पहले रिटायर हो जाएंगे, इतने पैसे कमाएंगे। सो वी नीड टू कम बैक टू रियलिटी कि सर आपको अपनी जॉब की रिस्पेक्ट करनी है, आपको अपनी कंपनी की रिस्पेक्ट करनी है, आपको अपने इंस्टीट्यूट की रिस्पेक्ट करनी है, राइट। सो बी कमिटेड टू द कंपनी इन विच यू आर वर्किंग, कीप लर्निंग, कीप कॉन्ट्रीब्यूटिंग, एंड आप देखेंगे कि आप ऑटोमेटिकली यू विल एनीवेज एक्सेल, राइट। आई मीन देन डिग्री विल नॉट मैटर देन, इट्स एन इंश्योरेंस एट द एंड ऑफ द डे। मुझे याद आ गया मैं क्या बोलना चाह रहा था जी। कि डिग्री इज एन इंश्योरेंस, राइट। आपके पास कोई भी एक डिग्री है तो वो आपको इंश्योर करेगी कि आप कभी भी अपने लिए एक जॉब अर्न कर सकते हैं, छोटा बड़ा, आपके फील्ड में किसी और फील्ड में, बट वो जॉब इंश्योर करेगी आपको। सो लुक फॉरवर्ड टू गेटिंग दैट, दैट्स इट। वंडरफुल। चलिए विकास सर, मैं इस सवाल को घुमा के पूछ लेता हूँ, कितने प्रतिशत लोग पहले अटेम्प्ट में सीए क्लियर करते हैं? मुझे इस बात का आंसर नहीं पता है सर। अंदाजन 1%, 10%, 20%, आई डोंट नो, 50%? आई थिंक नहीं। ओके, सो अगर 1 लाख स्टूडेंट्स एग्जाम दे रहे हैं, सो आज के ट्रेंड्स में अगर हम जाएं तो 12-13% स्टूडेंट्स पास हो जाते हैं। सो दैट्स द नंबर। सो हम आर टाइम्स इट यूज्ड टू बी 2-3%, अभी 11-12% स्टूडेंट्स पास हो रहे हैं। सो जो लोग पास हो रहे हैं उसमें से कितने लोगों ने फर्स्ट अटेम्प्ट में पास किया है, इसका डेटा पब्लिक रिकॉर्ड में आई डोंट थिंक कि आता है, बट या आई वुड से कि मे बी 1 or 2% स्टूडेंट्स वुड ऑफ द स्टूडेंट्स हु हैव पास्ड। अगर 11,000 स्टूडेंट्स सीए बन रहे हैं एक टर्म में, तो शायद उसमें से मतलब 500-700 स्टूडेंट्स होते होंगे जो फर्स्ट अटेम्प्ट में हो जाते होंगे, राइट। सो अगेन दैट्स व्हाई आई एम सेइंग इट डजंट मैटर देन, राइट, बिकॉज जॉब तो 11,000 को ही मिल जाती है।
बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बट निकिता, you have any views But I about? could be wrong. Yeah, I could be wrong. I know, I know. There's I'm no not sure. published data and CS कभी भी बिना published data के बात नहीं करते हैं, देख लीजिए यहाँ पे आपके सामने। निकिता, any views about this? कितने % लोग पहली बार में पास हो जाते हैं, ऐसा कुछ आइडिया? आपके फ्रेंड सर्कल में से कितने लोग फर्स्ट अटेम्प्ट में? सर, ये डेटा तो जैसे विकास ने कहा, ये कहीं पब्लिश होता नहीं है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में कितने बने, सेकंड अटेम्प्ट में कितने बने। वंस यू आर अ सीए, यू आर अ सीए। आपके नाम के आगे सीए लग गया तो लग गया। आपके एक बार में लगा या 2 बार में लगा, ये मैटर करता ही नहीं है। आप जब कहीं जॉब के लिए जाते हो, उसके बाद आपको कोई ये नहीं पूछेगा कि अरे तुमने कितने अटेम्प्ट लिए थे। उसके बाद आपके वर्क क्वालिटी मैटर करती है, ना कि आपके अटेम्प्ट या कितने बार में आप बने हो। तो सर ये मैटर नहीं करते, इसलिए इसको छोड़ देते हैं, इसको बात नहीं करते। चलिए चलिए चलिए, वंडरफुल 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 वे ऑफ वेरी पुटिंग इट। देखिए बॉयज एंड गर्ल्स, दिस इज हाउ अ सीएज कैरेक्टरिस्टिक इज, कि वो बिल्कुल व्हाइट हैट थिंकिंग करते हैं। व्हाट इज व्हाइट हैट थिंकिंग? डेटा, फैक्ट, वो भी बिलीव्ड फैक्ट नहीं, चेक्ड एंड करेक्टेड फैक्ट, और फैक्ट्स के बेसिस के ऊपर बात करना, ये एक और बहुत प्यारी क्वालिटी है जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की अपनी पर्सनालिटी में ढल जाती है, चाहे हो चाहे ना हो। चलिए, टाइम टू गेट इनटू अ रैपिड फायर, और तब तक आप अपने क्वेश्चंस बॉयज एंड गर्ल्स डालिए चैट में, तो फिर मैं आपके सवाल भी पूछूंगा, आपको भी शायद अनम्यूट कर दूंगा। मैं थोड़े से रैपिड फायर क्वेश्चन से शुरू करता हूं और फिर आपके सवाल लेता हूं गेस्ट के साथ। रेडी विकास जी, निकिता जी? और ये सवालों के अंदर ये नहीं चलेगा कि जवाब नहीं देंगे, पास नहीं चलेगा, ठीक है? पहले विकास, आप फिर इंडिविजुअली निकिता। पूछेंगे या हम लोगों को जल्दी जल्दी आंसर पहले देना है? विकास फिर निकिता। सो फर्स्ट विकास, ओके, then ऑलराइट। निकिता। सो पहला सवाल, व्हाट इज दैट वन थिंग यू लाइक अबाउट योर जॉब, विकास? I mean, there's innovation every day. I have to learn. I get to learn and do something new every day. निकिता? Same question. Yes, same question. The one thing which I liked is means as I have earlier told that every day I learn something new skills are being learned, and the work environment is really very good. So this is the best part of my job. Okay. If you would have not been a CA, what would you have been, Nikita? CA, CS, ICWA, कॉमर्स में नहीं होते तो क्या होते? Maybe I would have been traveling around the world or doing some painting or petty crafts. Wow, interesting. Vikas ji? Because I am a natured. Okay, विकास जी, आप क्या कर रहे होते अगर आप सीए नहीं होते तो? So honestly, I've never thought about it क्योंकि क्लास 12 के बाद, so yeah, maybe I would have become a consultant या ट्रेनर बन गया होता मैं, या मुझे बोलना बहुत पसंद है तो ज्ञान दे रहा होता, फुल टाइम ट्रेनर ज्ञान दे रहे होते। चलिए, बहुत बढ़िया। ओके, अकाउंटिंग पैकेजेस की बात करता हूँ। टैली, क्विकबुक्स, बिजी या जोहो या एसएपी, which one of them is your favorite or which one do you recommend? Tally. Tally. So some of them are very new for small companies, SAPs for large organizations, but yeah, broadly speaking, Tally. Nikita? Sir, Tally. Tally. Tally का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं बना है? It's easy to handle. As per my knowledge, I am not having any knowledge of substitute of Tally. Wow. Okay, so QuickBooks is there. QuickBooks is catching up. It has some very good features, but I think Tally has good control over the regulations within India, so it scores better than QuickBooks till date. Yeah. Wonderful. चलिए, अब ये सवाल थोड़ा सा डिफिकल्ट जाएगा निकिता के लिए, लेकिन फिर भी उन्हीं से शुरू करते हैं। सीए और सीएस और आईसीडब्ल्यूए, इन तीनों में से क्या चीज आपको सबसे बेहतर लगती है? सर, तीनों को कंपैरिजन करना ही अपने आप में गलत है, क्योंकि तीनों अपने आप में एक प्रोफेशनल डिग्री है एंड तीनों के अपने अपने इंपॉर्टेंस है। एक कॉस्ट ऑडिटर ही कर सकता है, एक आईसीडब्ल्यूए का बंदा ही कर सकता है, वो ना ही सीए कर सकता है ना सीएस। जब आपको सेक्रेटरियल ऑडिट की बात आए तो कोई सीए या सीएमए का बंदा नहीं कर सकता, उसके लिए आपको अपॉइंट तो सीएस ही करना होगा। वहीं अगर आपको चार्ट ऑडिट करवाना है तो आपको एक चार्टर्ड की जरूरत है, तब आप सीएस या आईसीडब्ल्यूए से काम नहीं निकाल सकते। तो तीनों की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है सर,
तो तीनों को कंपेयर करना ही अपने आप में गलत है। चलिए, मैं सीए से नहीं जीत सकता हूँ, लेकिन चलिए, मम्मी की पापा। दोनों। देखा, आप एक दोनों में से एक आंसर ले ही नहीं सकते हैं किसी सीए से, ऐसी बात है क्या विकास जी? सीए और सीएस और आईसीडब्ल्यू है, व्हाट इफ यू हैव So टू देखिए, चूज? I have not done CS or ICW, so for me it will be CA. But सीए होना। yes, I still तो endorse Nikita's सीए और answer. सीएफए, चलिए, आपने दोनों किए हैं। Still CA, sir. Yeah. सीए, चलिए, बढ़िया। आ, Yeah. Yeah. अच्छा, बैलेंस शीट, पीएनएल और कैश फ्लो? Cash flow, sir. निकिता? I don't know who you asked, but yeah. हाँ, that was for सर you, now कैश for फ्लो। cash flow. Wow. Okay. गैप और आईएफआरएस? IFRS. आईएफआरएस। आईएफआरएस, वाओ। चलिए, अब थोड़ा सा एक टिपिकल सवाल आता है, आरबीआई गवर्नर्स की बात कर रहा हूं, मनमोहन सिंह या और रघुराम राजन, विच इज योर फेवरेट? Manmohan Singh. रघुराम राजन। Manmohan Singh. मनमोहन सिंह, ओके। रघुराम राजन फ्रॉम निकिता, मनमोहन सिंह फ्रॉम विकास। इस पे थोड़ा सा आगे एक लाइन हो जाए, वाई, क्यों? No, again, so you asked me to सर pick one, therefore I picked one because yeah. Go ahead, Nikita. Go ahead. Nikita, सर go यू ahead. गो अहेड। आई चोज रघुराम All right. राजन So बिकॉज मनमोहन, because Manmohan Singh is popular more as a finance minister than as a RBI governor. Because in 1991, the policies which Manmohan Singh brought were truly remarkable, but those were as finance minister rather than as a governor. So I think as a governor, Raghuram Rajan is, I would prefer. विकास Sumaji, I'll जी? have to give it to Nikita. My bad. Actually, I actually misunderstood your question. Sorry, got a little confused. So As a yeah, finance I'll go by minister, what Nikita as a said. finance minister, you would prefer Manmohan Singh? Yeah. Sorry, I actually got confused with the question. Okay. Last question. If you were to become a finance minister for a day, what will be the first thing you will do? First goes to Nikita, then I'll come to Vikas. Sir, considering a current scenario, I would just go about simplification of taxes. It should be one nation, one tax, and one law. So, if I would have been a finance minister for a day, I would try to promote this. Awesome. Vikas ji? Honestly, I mean, I know it cannot be done in a day, but probably The first thing which you will do, I sir. would. Shuru kar Yeah, do. yeah. So I'd probably reduce the GST rates a little bit, or rationalize them a little bit. But yes, if I was there for a year, probably I will try and simplify. I know I won't be able to, right? But probably simplify the income tax laws. Yeah. I follow Subramaniam Swami a bit, and he says कि सबसे पहली चीज करनी चाहिए, इनकम टैक्स हटा देना चाहिए. We don't need income tax in the country. What are your views about it? इनकम टैक्स होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? निकिता? सर, आप कंट्री से जब आप कुछ ले रहे हो, तो कंट्री को आपको कुछ कंट्रीब्यूट भी तो करना चाहिए. आप एक्सपेक्ट करते हो कि आपके लिए बेटर रोड्स हो, वाटर फैसिलिटीज प्रॉपर हो, सैनिटेशन फैसिलिटीज प्रॉपर हो, तो उसके लिए फंड्स कहाँ से आएंगे? अगर टैक्स ही नहीं रहा तो गवर्नमेंट कहाँ से पैसा लाएगी? आप कंट्रीब्यूट करोगे तो ही तो गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ऑल डेवलप करेगी. सो टोटली एबोलिशिंग इज नॉट करेक्ट. Otherwise, you would also don't expect anything from the government. Okay. Vikas ji, your views? I mean, Sumit, I think taxes have to be there, no doubt about it. It's one thing to simplify it, and it's the other thing to get away with it. So yes, taxes are required. मैं just income tax की बात We कर need to रहा हूँ. increase it. हाँ, मैं भी income tax के बारे में ही बता रहा हूँ. So income tax must be there. We might have to rationalize the income tax. हम लोग tax net को बढ़ाएं, ज्यादा लोगों को tax bracket में लेकर के आए. I personally do not endorse the concept that you should tax the rich more.
which I mean, of course, a lot of people will disagree with me, but taxes, income taxes must be there. I mean, there's no point in saying that taxes होने ही नहीं चाहिए. Wow. Thank you. Boys and girls, any questions if you have, you could raise your hand. I could unmute you and you can ask your questions directly to the panel. We are almost 80 minutes into our discussion. I don't know whether Nikita or Vikas realized कि उनको भूख लग रही है कि नहीं लग रही है, but मुझे तो नहीं लग रही थी. But that was a wonderful discussion which happened. After 1 year, leap is limited except freshers, non-engineering. नेहा, आपका सवाल नहीं समझ में आया. If you want to ask your question, raise your hand. I'll unmute you. You could ask your question then. Waiting for another 30 seconds for any questions. Ishani has a question. Yes, Ishani. Where are you? Would you like to unmute yourself? Yes, I just wanted to ask, when you were on your journey to becoming a CA, did you ever put your work before family? If you did, what were your views about it? How did you ever regret that? Wow. Vikas ji, first to you. While becoming a Uh, chartered accountant, did you put your work before, prioritized your work before your family? And do you regret that? so when you say prioritized work before family, so like I said, I as part of my journey, I also mentioned कि I missed out on a lot of family events. मैंने अपने मामाओं की शादी attend नहीं करी, बुआओं की शादी. So we've missed a lot of family weddings. But you know what? जब आप अपनी when you are really on that journey, and you will always have your family support. I remember very clearly मेरे CA final के exams के time पे दिवाली का समय आया था. So if you're writing your exam in November, typically exams के बीच में दिवाली आ जाती है, right? And I was studying and I was the first CA in my entire building. And मुझे बहुत अच्छे से याद है, पूजा करके मैं बस पढ़ने के लिए बैठ गया था, because next day पेपर था. और दिवाली के बाद में हम लोग धोख देने जाते हैं लोगों के यहाँ पे. Everyone in the building, सब बिल्डिंग में सब लोग ग्रीट करने के लिए आते हैं. They said कि विकास को बाहर मत बुलाइएगा, we'll come to his room and we'll give him blessings and we'll go. Right? So never, I never regret that. Of course, I prioritized my education, my work. Right? I've learned that from my family, but that doesn't mean कि मैं अपने family को ignore कर रहा हूँ. मतलब I'm prioritizing it, right? So if my family needs me, I'm going to be there. But then I'm making those choices. If it's a celebration, if it's a function, if it's going out for dinner, I've missed hundreds of those. Yeah. And I don't regret it. No, You don't regret it. Nikita? no, not at all. Same with me, sir, because I am also a November product. I always wrote my exams in November and December month only. So talking about Diwali, and in October Durga Puja. Durga Puja is a big celebration there, and means besides my room only there was a pandal and those loudspeakers and all. But my mom used to make sure that okay, I get a corner in a room that sound doesn't come and I am able to focus on my studies. And those days I never celebrated from 2015 to 2019. I didn't even celebrate even a single puja, Durga Puja and Diwali. But always Saraswati Puja was means blessing for me, because after my results only Saraswati Puja came and I used to enjoy it like the Holi, Diwali, everything. So I never regretted about it. And at the end, what matters is what the sense of accomplishment which you have after clearing the exams would kill all your means that time that you had not enjoyed. So I never regretted about it. Ishani, thumbs up from you or no? मजा नहीं आया आंसर में. But this is a fact. Thank you, Vikas. Thank you, Nikita, for saying that. Thank Thank you, sir, ma'am, for clearing. I was really doubtful. Thank you, Ishani. Thank you Ishani, for asking that question. can I add a small question? I don't know if there are too many Yes. questions around, but a very small example. So I remember कुछ मेरे बहुत अच्छे friends थे जो CA नहीं कर रहे थे. They would ask me to go out and have fun and all that, right? But मैं उसको miss कर रहा होता था, because of course I had my office to take care of, my tuitions to take care of. And I remember my first audit engagement, and that audit engagement went very well, in the sense कि I was able to identify some non-performing assets, and हमने कुछ बहुत सारे exceptions निकाल दिए थे. And
So the client was very happy with what I did, and वो हमको dinner पे ले गए थे, and वहां पे उनको पता चला था कि ये मेरा first audit engagement है, and that whole environment that was given to me because I was an auditor or I was a chartered accountant in the making. I wasn't a CA then, right? I'm talking about my articleship. And then this client who sat next to me said, "अरे आपका first audit engagement, आपने तो maiden century मारी है, right?" And जो respect मिल रही होती है उस process में, right? I had just got a phone then. I actually texted two of my friends that यार तुम लोग के साथ में जो मस्ती मिस करी है ना, right? This is worth it. So, I mean, I remember those experiences. Those were amazing. So वो मस्ती वाले दिन मिस किए, लेकिन आज तो मस्ती कर लेते होंगे ना विकास जी, कि नहीं अभी भी नहीं जी करते? मालिक, बिल्कुल बिल्कुल, yes. Wonderful. So, boys and girls, thank you for being here. It was a wonderful evening with Vikas and Nikita talking about their journey as a chartered accountant. To summarize in brief, if I would say, chartered accountant is something where you cross a competitive exam and get something which is a certificate or a degree, if I may say that word, that you become a chartered accountant. And that doesn't end here. The journey begins there. Like Nikita and Vikas very clearly said, that if you do not update yourself year after year, if you do not keep yourself into that profession, you would be a chartered accountant of a time. But if you be there, you are there. Now, reaching here is, I would say, a journey where it requires three qualities, very importantly brought in by Vikas. One, first thing, that you need to put in those efforts which are required there. Nikita said 8 to 10 hours she put in when she was not working. Vikas brought in the second example point of linking your learning and your articleship together, your subjects which you are studying, or even conducting your tuitions which you did, so that you are revising what your concepts are even there. And the third element of logical connections, remembering कि आपको कितना याद रहता है या नहीं. It is not about which attempt you cleared. It is not of an average. It is not about आपने कैसे पास किया, but पास किया ये important है. And that requires your determination to get into it. So boys and girls, this was Vikas and Nikita for you in our career conversation sessions. We do this specifically so that you get heads-on information, you get जो कहते हैं ना घोड़े के मुंह से सुनना, yeah, to listen from the horse's mouth. And that is something why we invite these professionals over here. We try to get you professionals who are experienced and professionals who are freshers in the same field, so that you can get to understand that one generation gap between Vikas and Nikita. You could see his 15 years of experience, you could see his 1.5 years of her experience, and you could learn from both of them. So thank you for joining in. Thank you Vikas ji, thank you Nikita. It was wonderful speaking to you. आप सबका धन्यवाद. Thank you. Thank you so much. Ji. Thank you very much. Thank you, Nikita. Pleasure having you. Yeah. And thanks to all the listeners. Take care. Thank you so much. Thank you. So boys and girls, thank you everyone. Yes, we'll conduct on MBA. Neha will do that. Thank you Kushwant. Thank you Neha. Thank you everyone. Sir.